11 क्लास प्रोबेबिलिटी पढ़िथिलो अच्छा 12th प्रोबेबिलिटी हमर स्टार्ट होचे एक्चुअली कंडीशनल इवेंट्स ठारो ट्वेल्थ प्रोबेबिलिटी टू स्टार्ट होचे कंडीशनल इवेंट्स अच्छा कंडीशनल इवेंट्स कोन मन कर दुईटा इवेंट हम पाखर अछि गोटे होची ए और डाला बी लेट A and B are two events. Then the probability of A when B has already occurred is P of A given B. अच्छा ताले P of A given B तार माने में कोन बुझछंदी probability of A when B has already occurred. अच्छा यार वैल्यू कोन हबो यार वैल्यू हबो P of A intersection B divided by P of B. But there is a condition. P of B should not be equal to 0. Because when P of B will be equal to 0, in that case, P of A slash B will become undefined. Hello? Denominator is 0 is 0. P of A slash B कौन is 0? Undefined is 0. एठी हमें P of A slash B कहले कौन बुझिबा ना probability of occurrence of both A and B divided by probability of occurrence of B. हेले पिला बसर भाबंतु A slash B माने A रे B टा डिवाइड हेछि A रे B टा डिवाइड हेनि A slash B रो माने हला A रो प्रोबेबिलिटी हम बाहर करूछंदी जेतोल B टा ऑलरेडी हेइ जाइछि हेले अच्छा एबे तो मन क्वेश्चन आस्तु जदि P of A slash B हे गला ताल तार उल्टाटा हेइ परिबो कि हां 100% हेइ परिबो ताको हम कहबा P of B slash A ताको कहबा P of B slash A P of B slash A माने probability of B when A has already occurred. Probability of B when A has already occurred. Okay. तारे LR value हबो P of B intersection A divided by P of A. किंतु P of B intersection A जहा P of A intersection B विषय ताले एटा जो P of A intersection B divided by P of A. Again 8 भी हमरो डिनोमिनेटर 0 हे परिबो नाही डिनोमिनेटर 0 ले टोटल टा कोन हिजबो अनडिफाइंड हिजबो सो क्लास 12 प्रोबेबिलिटी तमर एटू स्टार्ट होचे कंडीशनल इवेंट्स माने हमर एठी गोटे इवेंट ऑलरेडी हेइ जाईची हमें आ गोटे इवेंट रो प्रोबेबिलिटी बाहर करछन जो इवेंट ऑलरेडी हेइ जाईची सी हला तम पई कोन कंडीशन अच्छा एबे ए जो दुटा फार्मूला हमें पढिले ए फार्मूला एंड ए फार्मूला ए जो दुटा फार्मूला हम पढिले ए दुटा फार्मूला रु आमे चाहिले P of A intersection B रो वैल्यू बाहर करि परिबा एठी देखा P of A intersection B अछि ए वैल्यू टा चाहिले हम बाहर करि परिबा तले P of A intersection B जदि हम आनिबा ताले वैल्यू हि जिवो P of A slash B into P of B ए फार्मूला रानिबा जदि फर्स्ट फार्मूला रानिबा सेम सेकंड फार्मूला रानिबा ताले P of A intersection B हि जिवो P of A into P of B slash A अच्छा एटा को जाय हमरो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एको कोंती मल्टीप्लिकेशन
theorem on conditional probability. जाए multiplication theorem on conditional probability. अच्छा multiplication theorem किसी नुआ जिनस नुए एबे जो दीटा फार्मूला आम लिखिले से दीटा फार्मूला रो एक्चुअली आम p of a intersection b रो वैल्यू बाहर करिवे ताले आम लिख परिबा p of a intersection b तमने probability of simultaneous occurrence of a and b यार माने हला p of both a and b और तक हम कोई परिया probability of simultaneous occurrence of a and b तार वैल्यू हबो p of a slash b multiplied by p of b हम कोई परिवा p of b slash a multiplied by p of a हेले अच्छा एबे क्वेश्चन आछी आमे जो लिखले एबे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एक मात्र में दीटा इवेंट पे लिखिसंदी गोटे इवेंट हला ए और गोटे इवेंट हला बी अच्छा याठू अधिक इवेंट पे ही परिबो कि हां हे परिबो एटी मात्र दीटा इवेंट पे लिखिसंदी माने करो दीटा रो अधिक इवेंट अछि तीनटा इवेंट अछि कि चारटा इवेंट अछि पांचटा इवेंट अछि हले मोर देन टू इवेंट्स अछि तले सेही केस रे भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रे हमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आनी परिबा हले केमते आनिबा से केस रे देखा for more than two events अच्छा देखो ताको मैं नंबर 2 रे लिखुची for more than two events suppose I'll take four events a b c and d चारिटा इवेंट अछि गोटे हला a गोटे हला b गोटे हला c गोटे d ताले यार वैल्यू हो जबो p of a into p of b slash a into p of c slash a intersection b into p of d slash a intersection b intersection c अच्छा तामने एटा को हम जो लिखिले दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए बी सी एंड डी और ताको हम कहि परिया प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ ए बी सी डी अच्छा तार वैल्यू कोन हबो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए into probability of occurrence of b when a has already occurred into probability of occurrence of c when a and b has already occurred into probability of occurrence of d when a b and c has already occurred এটা আমি কলে एक्चुअली কোন मोर देन 3 इवेंट्स पाई हले अच्छा ये हला हमर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या पर बहुत गुडे क्वेश्चन अछि आज जदि टाइम होबो या पर क्वेश्चन करिवे नले नेक्स्ट क्लास रे करिवे अच्छा या पर नेक्स्ट हमर आछि क्लास 12 प्रोबेबिलिटी रे नेक्स्ट आछि हमर इंडिपेंडेंट इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स अच्छा ए वर्ड रो मीनिंग रो जाना पड़ुची इंडिपेंडेंट माने केही कहा पर जदि निर्भर करनथुवे दीटा इवेंट मने कर अछि गोटे इवेंट हला ए आ गोटे इवेंट हला बी मने कर ए रो ऑकरेंस की नॉन ऑकरेंस किछि भी बी ऊपर डिपेंड करनथुवो किंबा बी रो ऑकरेंस की नॉन ऑकरेंस किछि भी ए ऊपर डिपेंड करनथुवो ता माने ए हेई कि बी हेई पारे ए न हेई कि बी हेई पारे ए बी दीटा भी न हेई पारंती माने ए हबो कि न हबो किछि भी बी ऊपर डिपेंड करिवने ताले सेई टाइप रो इवेंट को हम कहबा इंडिपेंडेंट इवेंट ताले ताले यार डेफिनेशन जदि हम लिखिबा ए टाइप रो तार डेफिनेशन two events
दीटा हम बोली मान नहीं दीटार अधिक भी पारे दीटा हमें फास्ट नौ A and B are said to be independent if the occurrence or non-occurrence of one of them do not depend on occurrence or non-occurrence of the other. तमाने गोटे इवेंट रो हबा कि न हबा जदि आउ गोटे इवेंट रो हबा कि न हबा पर किछि भी डिपेंड करनथबो देन सच टाइप्स ऑफ इवेंट्स आर कॉल्ड एज व्हाट इंडिपेंडेंट इवेंट्स तमाने एमि दे पारे ए हे कि बी भी हे पारे ए हे कि बी न हे पारे ए न हे कि बी हे पारे किंबा दीटा जगह इवेंट भी न हे पारंती ए टाइप रो जदि सिचुएशन आसीबो then the events will be called as what independent events. अच्छा जेमिति आमे एबे लिखिले कंडीशनल इवेंट्स पई मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एग्जैक्टली सिमिलर भी अछि फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स पई भी सिमिलर अछि हले अच्छा कोन फार्मूला अछि एउडा होछि फार्मूला इंडिपेंडेंट इवेंट्स पई if A and B are independent events, then जदि A और B independent events से थाए then A probability of their simultaneous occurrence P of A intersection B तामाने A भी हबो पुणी B भी हबो तार वैल्यू हबो P of A into P of B किंतु कंडीशनल प्रोबेबिलिटी केस रे अलगा हितला से केस रे P of A intersection B हितला कोन P of A into P of B slash A ये हो गया P of A into P of B ओके अच्छा देन second one P of A bar intersection B A bar intersection B माने A हबनी किंतु B हबो A इवेंट हबनी किंतु B इवेंट हबो ताले यार वैल्यू हबो P of A bar into P of B अच्छा थर्ड P of A intersection B complement और B bar तमन इठे में कहउसंदी A हबो किंतु B हबो नाही ताले यार वैल्यू हबो P of A into P of B bar अच्छा D
P of A bar intersection B bar. A bar intersection B bar माने A हबनी कि B हबनी ताले यार वैल्यू हबो P of A bar into P of B bar हले एई चारिटा कोनते कोन मल्टिप्लिकेशन थ्योरम फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अच्छा एकु छाड़ी की आ गोटे फॉर्मूला अछि मन कर एठी हम दरकार पड़िला प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 किंबा प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर 1 हले probability of at least one of the events or probability of either one of the events। अच्छा एट जो at least one or either one हमें कहउचंदी हले एठी हमें दीटा इवेंट नै परिबा तीनटा भी नै परिबा चारटा भी नै परिबा नेसेसरी नै दीटा नबा हले। अच्छा सेमती ऊपर जो लिखिले हमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम सेडा भी दीटा रो अधिका इवेंट पाई भी वैलिड हले जते अधिका इवेंट हले भी हे परिबो। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन और प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर वन ताको हम लिख परिबा P ऑफ A यूनियन B यूनियन C यूनियन D एमती केते नंबर्स भी तुम नै परिबो हले दैट इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हले। अच्छा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन माने नॉन माने एठी A भी हे परिबोनी B हे परिबोनी C भी हे परिबोनी D भी हे परिबोनी एम चलियो हले योजी इंडिपेंडेंट इवेंट्स रो फार्मूला हले या पूर्व हम पढ़ले कोन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रो फार्मूला ये हला कोन इंडिपेंडेंट इवेंट्स रो फार्मूला। अच्छा या पर बेस करिकी गोटे दिटा छोटो क्वेश्चन आगे सॉल्व करिवा हले क्वेश्चन मनकर अछि a pair of dice is thrown if the sum is at least 9 then find the probability that first dice resulted in a 5 हले गोटे पेयर ऑफ डाइस हम पकेले पेयर ऑफ डाइस हम पकेले पके के हम देखिले द सम इज एटलीस्ट 9 सम टा अति कम रे 9 हे जाइछ। अच्छा सम टा अति कम रे 9 हेछ माने सम 9 हेले भी चलिबो 10 हेले भी चलिबो 11 हेले भी चलिबो 12 हेले भी चलिबो सम इज एटलीस्ट 9 एटलीस्ट 9 मीन्स द सम कैन बी 9 और मोर देन 9 एटा ऑलरेडी हमरो हे जाइछ हले। अच्छा ताले इफ पर जोटा लिखा हेजी सेटा होची ए प्रकार क्वेश्चन नाम होची कंडीशन इफ पर जोटा लिखा हेजी एटा देखा लिखा हेजी इफ द सम इज एटलीस्ट 9 ताले एटा हला हमरो कंडीशन सम इज एटलीस्ट 9 सेटा हमको दरकार सॉरी दिया जाइची ऑलरेडी हम कोन बाहर करिया फर्स्ट डाइस रिजल्टेड इन ए 5 एटा हम पचरछि हले फर्स्ट डाइस रिजल्टेड इन ए 5 एटा हमको एक्चुअली पचरछि हले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रे जोटा कंडीशन सेटा एक्चुअली डिनोमिनेटर हबो
आम जो पी ऑफ ए स्लैश बी लिखुंट से एक्चुअली बी टा हूँ कंडीशन सेम जदि पी ऑफ बी स्लैश ए लिखा ताले से केस रे ए हूँ कंडीशन भल मन रख जोटा डिनोमिनेटर होची से हमर कोन कंडीशन। अच्छा ताले एठी हमें मन कर कंडीशन टा हमें ए बोली एज्यूम कर दबा ए हमें नबा लेट ए इक्वल टू सम इज एट लीस्ट 9। अच्छा ताले एटा हला हमर कंडीशन कंडीशन माने एटा को हमें डिनोमिनेटर रे रखिबा हला एटा हला हमर कंडीशन बी को हमें नेले हला जे फर्स्ट इज रिजल्टेड इन ए 5 बी को हमें नबा फर्स्ट इज रिजल्टेड इन 5 ताले एटा हमको पचारिछि एटा गिवन अछि दैट मीन्स वी नीड p of given टा सब बळे हमर डिनोमिनेटर आइबो हला गिवन टा डिनोमिनेटर। अच्छा त मने क्वेश्चन आस्तो जदि हम एरा रिवर्स नै जाय थांदे माने जोटा को a नै थांदे ताको b करथांदे जोटा b नै थांदे ताको a करथांदे ताहले भी ठीक हबो कि असुविधा हबो नै हला से केस रे किंतु p of b स्लैश a न बाहर करिके से केस हम बाहर करिया p of a स्लैश b ता उल्टा हबो किंतु फाइनल आंसर समान हबो p of b स्लैश a हमर फार्मूला हला p of a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाय p of a। अच्छा एको बे इक्वेशन 1 दे दबा एटा हमर दरकार अछि। अच्छा ए हला सम विल बी एट लीस्ट 9 सम ता अति कम रे 9 हबो हला। अच्छा सम 9 हो माने सम 9 हेले चलिबो 10 हेले भी चलिबो 11 हेले भी चलिबो 12 हेले भी चलिबो at least 9 means the sum can be 9 or more than 9 हला 9 हेले भी चलिबो 10 हेले भी चलिबो 11 हेले भी चलिबो 12 हेले भी चलिबो हला at least 9 means 9 or more। अच्छा सम आगे देखिबा 9 नंबर केमति हे परिबो 9 हे परिबो जदि हम एमति पाइबा 3 6 पाइबा हबो 6 3 पाइले हबो 4 5 पाइले हबो 5 4 पाइले हबो आउ 9 कोनोसी रेस परिबोनी। अच्छा 9 अधिक हेले भी चलिबो ताले 10 आसले भी चलिबो 10 आसीबो जदि हम पाइबा 4 6 किंबा 6 4 और 5 5 पाइले चलिबो। अच्छा तपर 11 11 आसीबो जदि हम पाइबा 5 6 6 5 आउ कोनोसी 11 आसी परिबोनी देन 12 ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ option that is 6 6 so these are the ways in which the sum can be at least 9 means the sum can be 9 or more। अच्छा एबे b को लिखिबा b हम निचंदी कोन हले b हम निचंदी the first I resulted in a 5 प्रथम डाई रे 5 आसीबो हले। अच्छा से कहूँ फास्ट आई स्टार 5 आसो ता माने सेकंड डाई ऊपर किसी से कहने केवल फास्ट डाई को फिक्स कराई आम सेकंड विषय रे किसी भाबिबार नै फास्ट टा 5 हबो सो सेकंड टा किछि भी ही पारे ता माने 5 1 चा पाइले चलिबो 5 2 पाइले चलिबो 5 3 चलिबो 5 4 भी ठीक अछि 5 5 भी ठीक अछि 5 6 भी ठीक अछि हले फर्स्ट डाइस टा 5 आसो सो फर्स्ट डाइस टा 5 सेकंड डाइस टा हमरो किछि भी परिबो सेकंड ऊपर कोनोसी रेस्ट्रिक्शन नाही। अच्छा एबे हमें ए इंटरसेक्शन बी बाहर करिया कारण हमरा फार्मूला रे ए इंटरसेक्शन बी दरकार देखिबा ए और बी भीतर कोन कॉमन अछि हले एट देखा 5 6 कोटा एलिमेंट कॉमन अछि 5 4 कॉमन अछि 5 4 फर्स्ट अछि पुनी सेकंड भी अछि।
अच्छा 5 5 फर्स्ट अच्छी सेकंड भी अच्छी 5 6 फर्स्ट भी अच्छी सेकंड भी अच्छी आ कौन से एलिमेंट कॉमन नाही हम तीनटा एलिमेंट कॉमन पाउछन कौन पाउछन 5 4 देन 5 5 एंड 5 6 ए तीनटा हमर होचे कॉमन एलिमेंट ताले कॉमन एलिमेंट तीनटा को लिखि दबा 5 4 एटा कोन देखला ओडा टिपी गेला जे स्टाइलस हां कहले टेक्निक ए लेखाटा ठीक আছে ସେଠି ଯାଉ ନା 5 5 and 5 6 these are the common element अच्छा आमे जदि गोटे पेयर ऑफ डाइस पकेबा ताल टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस हला 36 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस अच्छा एबे p of a intersection b इंटरसेक्शन बी रे देखा तीनटा एलिमेंट अछि टोटल हला 36 एलिमेंट so probability of a intersection b हला 3 by 36 अच्छा then p of a को जदि हमें देखिबा a रे केतरा एलिमेंट अछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 एलिमेंट अछि ताले एला हमर 10 by 36 हले अच्छा ताले p of a intersection भी हला 3 by 36 p of a हला के 10 by 36 एबे दीटा जगह वैल्यू नै के हमें रिप्लेस कर दबा इक्वेशन 1 में सो p of b slash a will be equal to केते जीवो 3 by 36 divided by 10 by 36 36 cancels so the answer is 3 by 10 is the answer ताने ए सब क्वेश्चन हमको आइडेंटिफाई करियर अछि गिवन कंडीशन कोन अछि कोन हमको बाहर करियर अछि हले से अनुसार हमें प्रोसीड करिया अच्छा एबे एको यूज करिकी ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यूज करिकी हमें गोटे क्वेश्चन करिवा जोथे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई हो हले मन कर क्वेश्चन अछि a bag contain 4 red and 5 black balls bag रे अछि 4 red and 5 black balls अच्छा एबे कोन कराला
3 balls are drawn. Drawn one by one without replacement from the bag. हेले बैग रे अछि चारिटा रेड बॉल और पांचटा कोन ब्लैक बॉल. आमे कोन गले तीनटा बॉल ड्रॉ कले वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट. बॉल ड्रॉ केम देछि विदाउट रिप्लेसमेंट. त माने गोटे बॉल हम आनिले हेले ताको रिप्लेस कलेनी पुणी गोटे सेकंड बॉल आनले पुणी ताको रिप्लेस कलेनी पुणी कोन गले थर्ड बॉल आनले. एमते हम तीन थर बॉल आनिछन्ती. पुणुस थर भी बॉल को रिप्लेस करा जाई नाही विदाउट रिप्लेसमेंट. हेले क्वेश्चन पचारछि find the probability that all the balls are red. Find the probability that all the balls are red. हेले हमें तीनटा बॉल आनिले गोटे पर गोटे किंतु रिप्लेसमेंट किसी करि नाहंती. से पचरछि सबुडा बॉल कोन हबो रेड बॉल हबो. तामने फास्ट भी गोटे रेड बॉल पाइबा पुणी सेकंड भी गोटे कोन पाइबा रेड बॉल पाइबा पुणी थर्ड भी गोटे कोन पाइबा रेड बॉल पाइबा. कंटिन्यूअसली तीनटा रेड बॉल पाइबा. तामने एटी ए बी एंड सी दैट शुड हैपन इन सक्सेशन. ए हबा दरकार पुणी बी हबा दरकार पुणी सी हबा दरकार. इवेंट को तुम एबीसी न बोली किसी माने नहीं. इवेंट को हमें यूजुअली नियंती क्वेश्चन अनुसार. क्वेश्चन देख रेड देछि तेणु करे हमें R1 R2 R3 नै छिबा. अच्छा सपोज हम नबा R1 R2 R3 are the events of getting red balls in first, second and third draw. हला फर्स्ट बॉल रेड ताकू नले हम कोन R1 सेकंड रेड ताकू नले R2 थर्ड टा रेड ताकू नले कोन R3. हमको कहछि तीनटा जगह रेड हबो. तीनटा जगह रेड हो माने R1 भी हवा दरकार R2 भी हवा दरकार R3 भी हवा दरकार. तामले हमर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ता हे गला रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हे गला P ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2 इंटरसेक्शन R3. हेला हमर कोन रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. फर्स्ट टा भी हवा दरकार सेकंड टा भी हवा दरकार थर्ड टा भी हवा दरकार. अच्छा एबे क्वेश्चन आसुची जे एठी हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी काई पकेबा काई हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स पकेबानी. तार कारण हला हमें एठी फास्ट गोटे बॉल आणुछंती ताको आ नै कि थौ नांती पुणी आ गोटे बॉल नै आछंती हला. तेणु करी एठी सेकंड ड्रॉ टा डेफिनेटली फास्ट ड्रॉ पर डिपेंड करिवो कारण नंबर ऑफ बॉल्स एठी कमी जिवो. फास्ट जदी गोटे रेड बॉल आस जाइथिवो ताले रेड बॉल नंबर्स कमी जिवो. जदि गोटे बाय चांस ब्लैक बॉल पड़े जाइथिवो ताले टोटल नंबर ऑफ बॉल्स गोटे कमी जिवो. तेणु करी एठी R2 R3 ए जो इवेंट अछि तार R1 R2 ऊपर डिपेंडेंस 100% अछि हले. कारण नंबर ऑफ बॉल्स एठी कमी जाउछि. गोटे इवेंट ऑलरेडी हे जाइछि हम आ गोटे इवेंट बाहर करछन. So that is why we will apply here conditional probability instead of independent event. एई समान क्वेश्चन जदि से लिखितांदा फास्ट हमें बॉल आणुचंदी ताकू देखिदेले को कलर बॉल आसला पुणी ताकू रिप्लेस करदेले. मन कर देइथंदा आमे बॉल को आनिले देखिदेले को कलर बॉल पुणी ताकू गले रिप्लेस करदेले.
ताले सेही केस रे आमे इंडिपेंडेंट इवेंट्स पकेबा इंडिपेंडेंट इवेंट्स काई पकेबा कारण सेही केस रे नंबर ऑफ बॉल्स सबले समान थिबो नंबर ऑफ बॉल्स समान अछि माने तमे जहां भी करो फर्स्ट पाई जहां प्रोबेबिलिटी सेकंड पाई सेम प्रोबेबिलिटी आसीबो अच्छा ताले p of r1 intersection r2 intersection r3 ताकू लिखिबा इक्वल टू p of हम जो फार्मूला पढ़थिले टिके आगुरु r1 into p of r2 slash r1 into p of r3 slash r1 intersection r2 एटा हमर फार्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फार्मूला अच्छा एबे जो बैग हम पाखर अछि हले ता पई एठी ओडे दिस इज सपोज द बैग ए बैग रे हम पाखर अछि 4 रेड and 5 black balls 4 balls are red and 5 balls are black एबे ए जो इवेंट उडागर प्रोबेबिलिटी हम सब लिखिले उडा इंडिविजुअली सब बाहर करिया हले p of r1 then p of r2 slash r1 then p of r3 slash r1 intersection r2 ये सब बाहर करिया हले अच्छा प्रोबेबिलिटी रे वर्ड बहुत मैटर करे माने तमे जो सिंबल लिखुचो से सिंबल रो एग्जैक्ट मीनिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड p of r1 अच्छा देखो एठी हम r1 लिखिछन कोन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a red ball in the first draw probability of r1 probability of getting a red ball in the first draw रे हमें गोटे red ball पाइबा अच्छा जतले हमें first ball draw कले red ball तो चारिटा अछि total 9टा अछि so probability of getting a red ball will be 4c1 divided by 9c1 it actually combination apply हला 11 class permutation combination chapter पढ़ दिला 4c1 divided by 9c1 चारिटा रेड रू गोटे आनिले 4c1 वेरे हले टोटल गोटे आसला केते वेरे 9c1 वेरे 11 क्लास रा कॉम्बिनेशन परमुटेशन जे मने थिबो 4c1 is same as 4 9c1 is 9 अच्छा then we'll find out p of r2 slash r1 अच्छा एबे हम देखिबा r2 टा को हम कोन नै छथि सब बेले सिंबल लिखिला परे सिंबल रे ताको हम लैंग्वेज रे ट्रांसलेट करिवा जदि सिंबल को तमे लैंग्वेज को ट्रांसलेट करि परिबोने ताले क्वेश्चन हबो नाही जमा सिंबल ताको हम लैंग्वेज को ट्रांसलेट करिवा p of r2 slash r1 r2 हला गेटिंग a red ball in the second draw r1 हला गेटिंग a red ball in the first draw ताले r2 slash r1 कहले हम बुझुचंदी getting a red ball in the second draw when a red ball is taken in the first हले जेतो तुम इनिशियल स्टेज रे प्रोबेबिलिटी थिबो सब बेले ताको लैंग्वेज रे लिखि देले तुम अंडरस्टैंडिंग बेटर हो लैंग्वेज सब लिखि दबो ताउ टिके हले मींस इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ red ball in second draw when red ball is obtained in first. Probability of getting a red ball in the second draw when a red ball is obtained in first. Second रे red ball पाइबार probability जेतला first गोटे red ball आसी जाइछि यार मीनिंग को भलो करी बुझो सेकंड रे red ball पाइबार probability जेतला first गोटे red ball आसी जाइछि अच्छा फास्ट जदि गोटे रेड बॉल आसी जाइछि ताल रेड बॉल रो नंबर्स जहा थिला से आ नथिबो गोटे कमी जाइथिबो ताले रेड बॉल एबे तीनटा हे जाइथिबो अच्छा टोटल हमर जो थिला 9टा बॉल 9टा न होके बे 8टा हे जाइथिबो ताले ए एस जो हमर 3c1 divided by 8c1 means it is 3/8 अच्छा then third probability we'll find out means we'll find out this one p of
ये प्रोबेबिलिटी बाहर करिया R3/R1 intersection R2. So it is R3/R1 intersection R2. या माने ला probability of third ball is red when first and second ball obtained are red. तामने थर्ड ड्रॉ रे हम गोटे रेड बॉल पाइबा थर्ड ड्रॉ रे गोटे रेड बॉल पाइबा जतले फर्स्ट हम गोटे रेड बॉल पाइछंदी पुणी सेकंड रे भी गोटे रेड बॉल पाइछंदी फर्स्ट गोटे रेड बॉल पाइछंदी पुणी सेकंड गोटे रेड बॉल पाइछंदी अच्छा फर्स्ट जदि गोटे रेड बॉल पाइछंदी सेकंड भी गोटे रेड बॉल पाइछंदी ताले दीटा रेड बॉल पळे जाइछ ताले बे रेड बॉल आउ दुईटा ही थिबो दीटार गोटे आनिबा 2C1 अच्छा दीटा जेहेतु रेड बॉल पळे जाइछि तनो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स एबे आउ 9 न थाई कि 7 थिबो सो डिवाइडेड बाय 7C1 2C1 is 2 7C1 is 7 so it is 2/7 अच्छा एबे सब वैल्यू को नेकी रिप्लेस कर दबा में इक्वेशन 1 रे हला सो बाय 1 हमर प्रोबेबिलिटी जोटा दरकार थिला P of R1 हमरा सिकेते 4/9 तापरटा आसी 3/8 तापरटा आसला केते 2/7 हला अच्छा एको सिंपलीफाई कर दबा 3 9 कैंसिल कर दियो एटी 3 आसी गला 4 8 कैंसिल कर दियो 2 आसी गला पुणी 2 2 भी कटि गला so answer is 1/3 into 7 1/21 is the answer हला मतलब इनिशियल स्टेज रे अच्छा सब प्रोबेबिलिटी रे विशेष तरबर होबनी प्रथमे यू हैव टू आइडेंटिफाई द इवेंट्स प्रॉपर्ली हला सबले निजुको से जगह रे रखी चिंता करियो एग्जैक्टली तुम कोन करियर अछि एठी वर्ड बहुत मैटर करे एग्जैक्टली वर्ड कोन कहिछि से मैटर करे बहुत हला ठीक रे न नेले भूली जो हला अच्छा एठी हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रे मल्टीप्लिकेशन को पकेले अच्छा ठीक सेमते में इंडिपेंडेंट इवेंट्स से भी मल्टीप्लिकेशन नहीं परिबा हला केमति नवा देखा इंडिपेंडेंट इवेंट्स को हम अप्लाई करिबा किंतु एठी मल्टीप्लिकेशन रखिबो रहिबो हला गोटे क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन is suppose a question is given to 3 students in a class क्लास रे तीनटा पिला गोटे क्वेश्चन दियाला हला a question is given to 3 students in a class whose probability of solving it are 1/3 2/5 and 3/4 respectively तामने फर्स्ट पिलाटा फर्स्ट स्टूडेंट से क्वेश्चन टा करि परिवार प्रोबेबिलिटी हला 1/3 सेमदी सेकंड पिलाटा क्वेश्चन करिवार प्रोबेबिलिटी हला 2/5 थर्ड पिलाटा क्वेश्चन टा सॉल्व करि परिवार प्रोबेबिलिटी हला 3/4 फर्स्ट पिला पई 1/3
सेकंड पिला 2/5, थर्ड पिला के थर्ड स्टूडेंट 3/4 है। अच्छा मु क्वेश्चन पचारछि find the probability that A exactly one solve the question. Second bit, the question will be solved. Third bit, exactly two solve the question. Fourth, question is not solved. है। अच्छा क्लास जदि तीन टा पिला क्वेश्चन दिया होची ए क्वेश्चन टा सॉल्व करि परिबो कि न करि परिबो बी ऊपर तो किछि डिपेंड करने ए निजर नॉलेज यूज करी सॉल्व करिवो से बी निजर नॉलेज यूज करी सॉल्व करिवो सी भी निजर नॉलेज यूज करी सॉल्व करिवो सो ए क्वेश्चन टा करि परिबो कि न करि परिबो बी ऊपर किछि डिपेंड करने से बी पारियो न परिबो सी ऊपर भी किछि डिपेंड करने हले सो दैट इज व्हाई द इवेंट्स आर व्हाट इंडिपेंडेंट इवेंट्स कारण ए पारिबो न पारिबो किछि ऊपर बी ऊपर डिपेंड करने बी पारियो न पारिबो किछि सी ऊपर डिपेंड करने हले so that is why here the events are what independent. अच्छा ए सॉल्व करि पार प्रोबेबिलिटी हमहु दिया छै केते 1/3 ता माने ए को जदी तीनटा क्वेश्चन दिया हला ताले से गोटे क्वेश्चन सॉल्व करि परिबो दुईटा पारिबो 1/3 माने आउट ऑफ एवरी 3 he solve 1 बी सॉल्व करियर प्रोबेबिलिटी दिया छै 2/5 ता माने बी को जदी पांचटा क्वेश्चन दिया हबो ताले से दुईटा सॉल्व करि परिबो सेमदे सी रो प्रोबेबिलिटी दिया छै 3/4 तामाने सी को जदि हमें चारिटा क्वेश्चन दबा ताले से तीनटा क्वेश्चन करि परिबो हला एटा मु नल दिया हिच अच्छा बिट 1 कहै छै एक्जेक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम एक्जेक्टली वन ऑफ देम सॉल्व प्रॉब्लम माने एमथि पारे ए सॉल्व करियो बी और सी परिबेनी किंबा बी सॉल्व करियो ए और सी परिबेनी किंबा सी सॉल्व करियो ए और बी परिबे नाही एक्जेक्टली वन माने केवल जणे सॉल्व करियो हला अच्छा ए सब क्वेश्चन ने डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट रो रोल आसियो तेणुक समस्त कॉम्प्लीमेंट रो प्रोबेबिलिटी हम बाहर कर दवा पी ऑफ ए इज 1/3 पी ऑफ बी इज 2/5 पी ऑफ सी इज 3/4 एबे समस्त कॉम्प्लीमेंट रो प्रोबेबिलिटी आनिसिबा ताले पी ऑफ ए बार हला 2/3 तुम जानते हो पी ऑफ ए बार हुए 1 माइनस पी ऑफ ए अच्छा समझी पी ऑफ बी बार अब 1 minus 2/5 1 minus 2/5 means 3/5 p of c bar say about 1 minus 3/4 means it is 1/4 हले so हमरो p of a p of b p of c आ तांगरा कॉम्प्लीमेंट रो सब प्रोबेबिलिटी हमें लिखि देले अच्छा एबे हम आसीबा जहां मु पचारछि बिट 1 कहिछि p of exactly 1 exactly 1 solve exactly 1 solve माने एठी हमर तीनटा केस आस पारे तीनटा केस कोन एमथि पारे ए बी सी अच्छे ना मनकर ए सॉल्व कर दला बी पारलानी सी भी पारलानी एटा ही पारे और ए पारलानी बी सॉल्व कर दला सी पारलानी एटा भी पारे और
आउ थर्ड केस कौन हो पारे ए पार्लानी बी भी पार्लानी सी मनकर सॉल्व करदला। अच्छा 11 क्लास रे परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़िथिबो और आसले हमें एडिशन करंती। सो p of exactly one solve means so three cases are possible। मनकर p of a solve कला b solve कला c पार्लानी किंबा p of a पारिलानी b solve करदला c पार्लानी किंबा p of a पार्लानी b भी पार्लानी c solve करदला हेले आइदर और आसुबनी हम कौन करिवा एडिशन करिवा 11 क्लास रो परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर रे पढ़थिबो। अच्छा एबे p of a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c बार ए पारिबो न पारिबो बी ऊपर किछि डिपेंड करेनी बी पारिबो न पारिबो सी ऊपर किछि डिपेंड करेनी। सो द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट्स पई साइमल्टेनियस अकरेंस रे हमें मल्टीप्लाई करंदी। आज टिके समय अगर पढेइतली ताले एठी मल्टीप्लाई हे जिवो सब। ये कोन हे जिवो p of a into p of b into p of c बार तापरटा हे जिवो p of a बार into p of b into p of c बार p of a bar into p of b bar into p of c हला एबे सब वैल्यू डाको रिप्लेस कर दो। सब वैल्यू हम एठी बाहर करछंदी जो सब वैल्यू सब बाहर छि से सब वैल्यू कोन करिवो रिप्लेस कर दो विल गेट द आंसर हला। अच्छा सेकंड बिट रे कहि छि p of exactly 2 सॉल्व ये जस्ट प्रीवियस बिट भलिया exactly 2 सॉल्व exactly 2 माने एमती हे पारे a और b सॉल्व कले सी पारलानी किंबा ए सॉल्व कला बी सॉल्व करि पारलानी सी सॉल्व कला किंबा एमती हे पारे ए पारिलानी बी सॉल्व कर दला सी भी सॉल्व कर दला। ये भी सेमती मल्टीप्लाई हे जो गोटे गोटे p of a into p of b into p of c बार हला सेम प्रोसेस चलियो जेमती पूर्व रहितला p of a into p of b into p of c बार प्लस सेकंड से बड़ा लिखिबो थर्ड टाइम से बड़ा लिखिबो देन विल डू द कैलकुलेशन। अच्छा नेक्स्ट बिट रे कहिछि थर्ड बिट रे ओहो द एटा मु सी टा कर देली आगे ओ एबे जोटा कहले एटा बी नुहे एटा सी एक्जेक्टली टू विल सॉल्व हला एटा सी टा कर देली। अच्छा बी रे कहिछि द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड मींस एला p of at least one solve गोटे काम हे गला माने हले जदि तीन जण लोक गोटे काम दिया आमे केतल कहया कामटा हे गला बोली तीन जण करिया किसी जरूरी नाही हले अति कम रे जे जणे कामटा कर देला स्टिल विल से द वर्क इज डन। पिला बहुत समय भाबंदी जे तीन जण करिया दरकार नो नॉट लाइक दैट। मनकर कोनोसी गोटे घरर काम पई तीन जण लोक को असाइनमेंट दिया जे असाइनमेंट देइछि से केतल जानिबो कामटा हे गला बोली काम तार हेथियो दरकार जणे कामटा करू दी जण करू तीन जण करू हले। सो p of problem is solved means probability of at least one solve the problem हले probability of at least one। तमने एटा हबो अच्छा टिके आगु पढैतले probability of at least one हुए 1 minus probability of none तले एटा हे जो हमर केते
1 minus p of non माने a पारिबनी b भी पारिबनी c भी पारिबनी 1 minus probability of non 3 जन जाका ट्राई कले 3 जन जाका पारले नहीं so that will be equal to 1 minus p of a bar into p of b bar into p of c bar अच्छा ये सब वैल्यू हमर आछि आगरु ताकबे एठी रिप्लेस कर दले यू गेट द आंसर अच्छा नेक्स्ट बिट इज सेइंग क्वेश्चन इज नॉट सॉल्व्ड क्वेश्चन सॉल्व हैला नहीं फोर्थ बिट problem is unsolved माने a पारलानी b भी पारलानी कि c भी पारिला नहीं हला अनसॉल्व माने a पारलानी कि b भी पारलानी c भी पारलानी अच्छा ये तीनटा वैल्यू ऑलरेडी बाहर छी हला तीनटा जगह एटी पुट कर दबो you'll get the answer हला अच्छा again we'll have the second session after 15 minutes all of you join को टिके ये कर दियो आशुतोष फास्ट तुमरा 8:45 है ना ब्रेक दियो